Good evening, everyone. Welcome to Lakshya Academy. Today, we are here for yet another session of Thursday's free webinar series organized by Lakshya Academy. Today, we are so glad to have Dr. Manasi Modi ma'am with us. Thank you, ma'am, for accepting our humble invitation and being here with us today to discuss with us on the topic Ayurvedic perspective of premature menopause. Before moving to the session, I would like to take this opportunity to introduce ma'am. Dr. Manasi Modi ma'am completed her BAMS from Nadia, Gujarat, and Master degree in PTSR from the prestigious IPGT and RA, Jamnagar, Gujarat. She served as Associate Professor in the Department of PTSR at the Parle Institute of Ayurveda, Vadodara. Ma'am has presented papers in national and international seminars and published articles in peer-reviewed journals. Ma'am is currently serving as Medical Officer in the Gynecology Department at Government Ayurveda Hospital, Vadodara, Gujarat. With this, I would like to welcome you, ma'am. Without further delay, I'm handing over the session to ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, dear Dr. Madam, for introducing me such a great way. Thank you very much. Good evening, everyone. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Good evening, everyone, respected dignitaries, my seniors, and of course, my colleagues. Before starting this presentation, today I would like to thank you, my one and only mentor, and that is Dr. Kamini Diman Madam, who gave me this amazing opportunity to share my ideas, my views, and my hard work on this unique topic. I have pleasure in presenting this webinar to the, of course, August Fraternity Doctors community. There has been a very less interaction on this subject, so let us dwell in details on this subject. So my today's topic is, as per mentioned before, that is the Ayurvedic perspective on premature menopause. Let's have a focus. First of all, why this topic is important for all of us. Friends, nowadays, due to a change lifestyle, psychological and physiological symptoms of early menopause are much pronounced and require much importance in international medicinal world. So, why should we not accept hormone replacement therapy, as it creates unnecessarily cancers like endometrium, loss of memory problems, allergic reactions, impaired motor functions, immobility problems, and drug dependency. Menopause is a natural phase in a woman's life, typically occurring around the age of 51. But for some women, this biological change begins earlier than expected, a condition known as early menopause. Early menopause, also known as premature menopause or premature ovarian insufficiency, refers to the condition where a woman's ovaries stop functioning before the age of 45. A woman stops having menstrual cycles and can no longer conceive naturally, which typically occurs between the ages of 45 to 55, with the average age being around 51 years of age. So, after all, the difference between early and premature menopause are: early menopause occurs before the age of 45 but after 40 years of age, while premature menopause happens before a woman reaches 40 years of age. So, friends, premature ovarian failure, what it says, in which amenorrhea due to cessation of ovarian function takes place before 40 years of age, which includes primary amenorrhea with no pubertal growth and secondary amenorrhea with amenorrhea for at least 3 months, raised FSH and LH ratio, and there is the deficiency of estrogen, especially E2 receptor. This is the WHO classification of ovarian insufficiency from group 1 to group 7, which includes hypothalamic pituitary failure to amenorrheic women with space occupying lesions. So, what is the clinical presentation in primary POF? It includes primary amenorrhea, no pubertal changes,
absence of sexual maturation, reduced growth velocity. In more than 50% of cases, there will be an ovarian dysgenesis. What happens in secondary POF? It represents with secondary amenorrhea, hot flushes, and sweating in 75% of cases, diminished libido in 10 to 20% of cases, vaginal dryness and urinary symptoms are there. Osteopenia and osteoporotic conditions are also being there. Infertility cases are there. Normally in menopause, permanent cessation of menses occurs for at least 1 year and physiologically correlated from the loss of follicular function, which happens same in this early menopausal condition. But there is the difference in age. Amenorrhea with sign of hypoestrogenemia and the elevated level of FSH and LH. Various symptoms like hot flushes and other acute symptoms are associated with this period. It is the counterpart of menarche. Counterpart of puberty and is transitional phase of 1 to 5 years during which the genital organs involutes in response to cessation of gonadal activity. Causes of cessation are the menstrual cycle ceases due to the disappearance of all the primary oocytes, which is an aging effect. So, regardless of whether menopause occurs early or prematurely, the bodily changes remain the same. Both involve the cessation of menstruation, decreased production of hormones such as estrogen and progesterone, and the inability to conceive naturally. Causes of premature menopause. Here we have to focus as that is important. First of all, POF is a condition where the woman's ovaries stop producing eggs and estrogen hormone in the body. Study shows that women with epilepsy often have premature ovarian failure leading to early menopause. The another second condition that is autoimmune disorder in which body treats its own tissues and organs as foreign bodies and attacks them. These diseases could adversely affect the functioning of ovaries and represents as premature menopause. Some lifestyle disorders like chronic backache, diabetes, obesity, infertility, cardiovascular diseases, and anxiety and depression disorders are also connected with this condition. While obesity is bad for overall health, a healthy BMI with optimum weight actually supports estrogen production as estrogen is stored in fat cells. Here, some chromosomal abnormalities are also associated with this condition. That is the condition of trisomy 13 and 18. Of course, the Turner syndrome condition is also in this, which characterized by missing or incomplete sex chromosome, X chromosome, which also contributes to the immature and unhealthy development of X. Another important factors which affect this menopausal, early menopausal condition are genetics, chemotherapy and radiation therapy, and hysterectomy and oophorectomy effects. So, what is the early signs of menopause? That is the changes in menstrual cycle. Gradually, that happens, irregularity in periods, scanty flow, etc. Hot flushes, in especially night sweats, and redness in the body. Night sweats, vaginal dryness due to the decreased level of the estrogen. We all know that. Early signs of menopause further includes mood swings, especially irritability, anxiety, or mild depression, difficulty in sleeping, and decreased libido. So, finally, early menopause and its implications are ovaries do not produce eggs. Second, estrogen levels fall. Third, there is no period, no pregnancy. So, what are the vasomotor symptoms associated with these conditions? That are hot flushes, mood changes, depression, sleep disturbances, and fatigue. We can also refer urogenital symptoms like dryness of vagina, dysuria, urinary leak, urinary frequency, and sexuality problems.
which all symptoms we can see in early menopausal condition also. That's why I'm describing here. In musculoskeletal system, there is the weakness of muscles, which is called sarcopenia, joint aches, body ache, pain, osteoarthritis, and osteoporotic changes. Another symptoms are, we all know that menstrual irregularities, unintended pregnancy, palpitations, muscle and joint pain, low back ache, dryness of skin, hair loss, nail problems, eye problems, gum and teeth problems. So this is very important. The role of stress in triggering early menopause. Stress, both physical as well emotional, has been observed to play a role in the onset of early menopause. Chronic stress can disrupt the delicate balance of hormones in the body, including those responsible for reproductive functions like follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and estrogen hormone. Health impact and risk of early menopause. Estrogen plays a crucial role in many bodily functions. It protects against heart disease, supports bone health, and helps in maintaining skin elasticity. Early depletion of estrogen can increase the risk of certain health issues such as heart disease, osteoporosis, and certain types of cancer. Early menopause can also impact mental health, contributing to feeling of depression, anxiety, and lower self-esteem due to the premature onset of menopausal symptoms. So health risk of early menopause are fertility issues, bone health, cardiovascular health, and mental health. See, this is important. Weight gain and other health issues with early menopause. As we know, weight gain is common during menopause, and early menopause is no exception. Hormonal changes can alter the way in body distributes fat, leading to weight gain, particularly around the abdomen. With weight gain, there is the increased risk of other health issues such as vaginal dryness, urinary problems, sexually dysfunctions, and sleep disturbances. These are the long-term problems, which include heart disease, osteoporosis, forgetfulness, Alzheimer's disease, arthritis, diabetes, hypertension, problems of hearing and vision. These are the diseases more prone we have previously discussed as per shown in the slide. In this slide, in one side, there is normal ovary functioning, and in the other side, left portion, there is premature ovarian sufficiency ovary. What happens in normal ovary? There is the normal production of hormones and result in the development of primordial follicles, which further develop to preantral follicles, which leads to small antral, to medial antral, to large antral follicles. Finally, which turns into the pre-ovulatory follicle, then a rupture of the ovum takes place and corpus luteum happens. While what happened in POI ovaries, all these stages are under atresia and number of primordial follicles are exhausted in this condition. So finally, there is the two ways. One is brain, another is uterus. In brain, there is the impairment of hypothalamus, and this desynchronized gonadotrophin hormone secretion leads to the impairment of FSH and LH secretions, which further lead to the loss of menstrual cycle. What happens in uterus? In ovary, there will be the decreased in ovarian follicle mass and function, and estradiol fluctuations and decline in anti-Mullerian hormone and inhibin B leads to the loss of menstrual cycle. So, diagnosis and evaluation of this condition should be like this. Menstrual irregularities for at least 3 consecutive months, FSH, LH, and estradiol levels at 2 random tests at least 1 month apart, prolactin function test carried out, and thyroid function test also carried out. If diagnosis is confirmed, then we should carry out karyotypes, immunological test, and pelvic ultrasound sonography. What investigations show? FSH
may be greater than 40, estradiol level less than 20, karyotyping in thyroid dysfunctions, TSH may be high and low, calcium low, blood sugar may be high. In USC, there will be the small ovaries with no growing follicles, and there may be sometimes ovarian cyst and fibroid. So these are the 4 steps. Protocol for diagnosis of secondary POF are: first, progesterone challenge test. If bleeding occur after giving 21 days of progesterone, it represents at impact an adequate level of estrogen and responsive endometrium. But if bleeding does not occur, it represents lack of progesterone receptors with diseased endometrium. Second step, estrogen progesterone combined challenge test. If bleeding occurs, then it represents like responsive endometrium but inadequate estrogen. If bleeding does not occur, it represents local endometrial lesion and we should carry out hysteroscopy HSC. Step number 3, serum gonadotrophin estimation. If FSH greater than 40, it may indicate premature ovarian failure with resistant ovarian syndrome. But if FSH less than 40, it may be represented as primary pituitary dysfunction as well as secondary pituitary dysfunction. Number 4, GnRH dynamic test. After giving GnRH, if there will be the rise in pituitary gonadotrophins, it may indicate the hypothalamic dysfunction. But if no rise in pituitary gonadotrophins, it may indicate the primary pituitary disorder. So after all, ये सब हॉर्मोन्स का है कि एफएसएच एंड एलएच का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है और उसकी वजह से ओवरी के अंदर फॉलिकल रप्चर नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जनरेट होने में प्रॉब्लम होता है. और वी हैव टू करेक्ट हियर, ये जो 4 स्टेप मैंने दिखाए हैं उसका मकसद क्या है कि वी हैव टू फोकस टू करेक्ट ओनली एंडोमेट्रियम, वी हैव टू करेक्ट द एंटीमुलेरियन हार्मोन लेवल. That's why I have described in details these 4 steps. So what should be the management or what is the management in modern allopathic practice? Hormone replacement therapy, conjugated equine estrogens, serum estrogen receptor modulators, antidepressants, gabapentin, blood pressure medicines, enzymes, and sedatives. They are giving hormone replacement to minimize postmenopausal health hazards. Steroids only, they have options to correct the autoimmune disorders, and in fertility issues they have only IUI and IVF. So what to do according to them? Observance of personal dietary, seasonal, social, and psycho-spiritual conduct, good food and adequate exercises, adequate rest, timely containment of health issues. What not to do? Keep away from stress, erratic food habits, heavy and physical and strenuous work, addictions, social insecurities, etc. Now coming to our portion, and that is Ayurvedic. What Ayurveda says. Ayurvedic vision of menopausal issue. Either it is the condition of early, pre, or premature. That is only one quotation. तद वर्षात् द्वादशात् काले वर्तमानम् अश्रुक पुनः जरा पक्व शरीराणाम याति पंचाशतः क्षयम्, which has been quoted by Acharya Sushruta in Sharistan chapter 3. We all are aware. Factors for rajonivruti: kala, swabhav, vayu, karma, dhatukshaya, and abhigataj. So we can divide this rajonivruti in 2 types, kalaj and akalaj. स्वाभाविकास्तु क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्राः प्रकृतयः प्रकृति गृहणात् प्रकृति भवात् रोगाः गृह्यन्ते ते च कदाचित् स्वाभाविकाः कदाचित् दोषजाः. Means these are the 2 types, kalaj rajo nivruti and akalaj rajo nivruti. Kalaj rajo nivruti probable age around 50 years, while our case in this akalaj rajo nivruti before or after its probable age, with acute symptoms and which required medical attention to avoid hazardous effects. So friends, early menopause in Ayurveda
According to this, menopause is the stage of transition from pitta-dominated phase of life to the vata-dominated phase. That's why during the menopausal years, one naturally becomes prone to health symptoms related to vata imbalance and pitta imbalance. Such severe changes in her hormones levels and dosha balance poorly affect her metabolism as well. That's why some women may experience kapha imbalance also, such as excess weight gain, depression, and high cholesterol. These are the lakshanas. Vatas, Pittas, and Kaphas. In Vatas, we have shown mainly Shira, Shul, Adman, Atop, Anidra, and Brahma. In Pittas, we have shown maximum like Daha, Ushna Anubhuti, Trishna, Glani, and Yoni Daha, Mutra Daha. In Kaphas, we have shown maximum symptoms like Brahma, Angamarda, and Rudra Dravatva, palpitation like feelings. These are the Dhatuk Shayad Lakshanas which have been described in our books, like Rasa, Rakta, Mas, Med, Asthi, Maja, and Shukrakshayas. We can see in the slide. These are the Mansik Lakshanas, which includes Krodh, Shok, Bhaya, Dvesh, Smruti Has, Utsahani, Vishad, Chinta, Shirashul, etc. See, this is important. Correlation between the modern and Ayurveda. What Vata symptoms says. Vata resembles with precordial pain, hypertension, restlessness, backache, fear, and depression, while Pitta resembles with hot flushes, sweating, irritability, anger, night sweats, pruritus vulva, and bleeding disorders, while Kapha resembles with obesity, sleepiness, edema in joints, lack of motivation, feeling of heaviness, and lethargic conditions. So, probable samprapti of Rajonivrutti. What Bhav Prakash has mentioned in Purva Sthan, that is Vardhakya Vardhamanena Vayunam Rasa Shoshanat Na Tatha Dhatu Vruddhishya Tatastrat Anilam Jayeta. The dominant Vata dosh will have effect all over the female body, including all anatomical as well as physiological factors by virtue of its characters like Laguta and Rukshta. So considering these all points, the probable samprapti can be drawn under two main headings, and that is Kalat samprapti and Akalat samprapti. Though we have concern only Akalat samprapti, I should of course focus on Kalat samprapti, which stimulates the biological stimulation. Kal, Vayu, Swabhav, and Jaravastha can lead to the Dhatukshay Avastha, which stimulates Vat and Pit, but there is the decrease in Kaph stage. So, all these conditions lead to the Ras and Raktakshay Avastha, which leads to the Updhatukshay Avastha, which happens in Artavahasrota Sang and leads to Rajonivruti. While in Akalaj Avastha, due to the karma or environmental effect, it can directly lead to the Dhatuk Shayavastha and further Saprapti remains same as per shown in the slide. While in Abhigat Avastha, that is directly leading to Artavahasrota Sang and Rajonivruti happens. What is the Samprapti Ghatak? Upon Vayu Pradhana three doshas. There will be the Vayu, there will be the Pitta, there will be the Kaph. And Dushya, Rasa, Rakta, Masma, Dasti, Majja, and Artav. So, this is the important now. Ayurvedic management. किसकी चिकित्सा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, which has clearly been described by Acharya Charak in Sharistan chapter 1. कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजाः रोगाः स्वाभाविकाः दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रियः. What he said, स्वाभाविक है उसको छोड़ दो, अस्वाभाविक है जो अकालज है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही सेड दैट इज रसायन. रसायनम रसायन तंत्रम नाम वयस्थापनम आयुर्वेदा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च. Sushruth has mentioned. Along with rasayan therapy, we should adapt proper dincharya, proper rutucharya, particular yogasam, pranayam, and of course, the one and only ornament in our Ayurveda, and that is Panchakarma therapy. So, after all,
Management and prevention of early menopause in Ayurveda includes Ahar, Vihar, Aushadhi, and Karma. As Ayurvedic treatment and natural remedies focus on strengthening and rejuvenating the reproductive system. So, to avoid early aging, there are the three main treatment protocols. First of all, Rasayan and Vajikaran therapy. Second one is Nidana Parivarjanam. And third one is rehabilitation. See, this slide is important for all of us. Rasayan action in different levels with different drugs. Antioxidant drugs are Ashwagandha, Amalki, and Pipli. DNA repair drugs are Sariva and Shatavari. Cellular viability drugs are Ashwagandha, like immune system modulators are Guduchi, Amalki, and Suvarna, like that. What Rasayan effect? Labhopayohi shastanam rasadinam rasayanam. Improves nutrition, improves digestion, metabolism, and microcirculation, which leads to longevity, intelligence, fleshiness, and effectiveness in the body. Which four drugs I am using in my practice in the form of abstracts are Ashwagandha. Second one is Amla. Third one is turmeric. And fourth one is Shatavari. Why Ashwagandha? A powerful adaptogen. It helps the body manage to stress, and its potential benefits in promoting sound sleep and maintaining hormonal balance. While Shatavari is the queen of herbs, in Ayurvedic medicine, it contains the phytoestrogens. It can help balance female hormones, and also it is helpful in hot flushes and mood swings like conditions. While turmeric, it is active compound curcumin is known for its anti-inflammatory properties. So it is also helpful. And one and only, that is amla, it is the best antioxidant. It can also help in maintaining hormonal balance and boosting overall vitality. This is the compound drug, Ashokarist. So Ashokarist कंपाउंड ड्रग है, मेरा थीसिस ड्रग भी है. इसका उपयोग प्रीमेच्योर और प्री मेनोपोजल कंडीशन में किया जाता है बिकॉज इट इज हैविंग कषायन, स्तंभन एंड शीतल औषधि क्वालिटीज. But not like that. We should also focus other qualities of Ashokaris that can help to Rasayan, like Ashok, Sunthi, Haritaki, and Vasa and Chandan in Ashokarist are Rudya and Balya, which gives to Rasayan effect and which break down Samprapti of Rajonivrutti. Haritaki, Amalki, and Utpal directly having Rasayan effect. Musta, Ajaji, Sunthi, and Haritaki are Dipan and Pachan. So, which is doing Agni Pradipti, that Prashasta Dhatu Nirman takes place, Dhatu Pushti takes place, and Samprapti Vigatan happens. While Utpal, Haritaki, and Bibitaki are Medhya, and that is very important because of having Manas Tarpan and Indriya Tarpan properties, which reduces Chinta and shock, and which improves sleep also and breakdowns menopause. It is also Tridosh Shamak and Lakshanopshamanam happens. The another drug is Ashwagandha, as I have mentioned, but this is the detailed description of Ashwagandha, while it is highly used in this condition because of Balya, Vayasthapanam, Manas Tarpan, and Vajikaran effect. Due to Balya and Vayasthapanam effect, it is having Rasayan effect, which are doing Dhatu Pushti and break down the Samprapti. While containing of the alcohol, alkaloids, and glycosides, it is doing Manas Tarpan and supports sound sleep and anti-stress effect. While due to Vajikaran, it nourishes the reproductive system and improves the sexual dysfunction. In short, Ashwagandha improve the degenerative changes by effect on chondroplast and cartilages, hemopoietic effect by cyclophosphamide, and reduces leukopenia. Thus, Ashwagandha is the very well-known drug which is highly used in this condition. Another most important drug, that is Pravalpishti. Why? Because better and early result by using herbal calcium along with herbal phytoestrogen. जब बॉडी में फाइटोइस्ट्रोजन लॉस होता है, कैल्शियम रैपिडली लॉस होता है, as a part of this herbal calcium, Pravalpishti is used.
In the body where Pitta is having Ushnata and Amlata and likewise properties, Praval is also showing a soothing and cooling effect. So, coming to the Ayurvedic diet for early menopause, a balanced diet, phytoestrogens containing diet, and Vatanuloman diet. Three main siddhant in diet. Diet should be like warm foods and drinks, balancing for Vata dosha, maintain regular meals, avoid excess salt and chilies, reduce the use of caffeines and stimulants, stop consuming junk foods and cold drinks, avoid untimely meals as well, late night meals, and stop the consumption of processed food as well, packaged foods. Calcium rich foods, we all know that very much, especially soya bean and milk. We should not forget about magnesium level at this stage. The magnesium rich foods are whole grains, leafy green vegetables, dairy products, nuts, seaweed, and bananas. We should also maintain vitamin D level, as vitamin D is an essential nutrient that supports your bones, hormone balance, and heart health. With aging, vitamin D production in the body goes down. That's why majority of the menopausal women struggle with vitamin D deficiency. विटामिन डी के बारे में मैं इधर फोकस करना चाहूंगी कि अभी विटामिन डी का इतना क्रूशियल रोल है बॉडी के ऊपर कि वेट मेटाबॉलिक जो भी सिंड्रोम्स होते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, जैसा कि थायराइड है उसमें वेट बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर जब तक हम विटामिन डी का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेंगी, तब तक उसका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा. इट मे ऑब्स्ट्रक्ट टू रिड्यूस वेट. So that is very important. Once it cures, everything will be recovered simultaneously. Healthy fats are also important in the form of omega-3. Healthy fat promote heart health, strong immunity, and brain power. Several studies indicate that omega-3 foods can reduce psychological distress, anxiety, and mood swings. And phytoestrogen-rich foods. It includes the dry fruits, apple, cranberries, and blueberries are important, garlic, etc. Phytoestrogens will help to balance the subsiding estrogen levels. Thus, they will support hormone balance and prevent low estrogen levels. So, surviving and thriving through early menopause requires a combination of good health care, a supportive network, and proactive management of your well-being. Stay hydrated fully. With smoking should be advised. Cool down with mind and mindful relaxation should be there. And sleep should not be disturbed anyhow. Now, I cannot forget to discuss Panchkarma. That is the engine of these for the treatment of this disease. Effect of Panchkarma in primary ovarian failure. What I am doing? Virachan and Basti. Then Uttar Basti. As we know, Virachan includes Snehan and Swedan. Why Snehan? Snehan dravyas are help in Vata Prakopavastha due to having Sukshmata, Sarata, Snigdhata, and Mrudu qualities. Swedan dravyas also possess properties which are opposite to the Vata. It opens the Shrotas and regulates the blood circulation. And how Virachan helps? Virachan drugs are Kosthagni drugs, which quickly absorb through the microchannels and results in Vishayandan and Vichandan of Dosh and Mal. By its Anupraman Bhavat and its Adobhaga Prabhavit, remove dosha or maintain Samavata Avastha of dosha. Coming to Basti, in this condition, there is two systems. One is the central nervous system in upper side and enteric nervous system in lower side. दोनों एक दूसरे के साथ highly connected है. The ovarian cycle is regulated through the feedback of hormones on the central nervous system. The regulation of HPO axis by autocrine, paracrine, and endocrine mechanisms. Intestine is richly supplied with the nerves, and Basti affects on these nerves. एंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है बिकॉज इट इज हैविंग 500 मिलियन न्यूरॉन्स. इधर मैं ये डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि बस्ती
There are lots of thousands of basti has been mentioned in our books by different acharyas, and really we are getting marvelous results through bastis and long term bastis. So I have put these slides also because to show the importance of basti, how it works. Basti stimulate the ENS, enteric nervous system, and generates the signals for central nervous system. Basti given through rectum will stimulate this parasympathetic nervous supply, which in turn helps for the release of ovum from the follicle in the ovary. Now, what is the relation of endogenous opioids? These are group of peptides which play an important role in the ovarian cycle through the inhibitory effect of GnRH secretion. Essentially, endorphins and especially endogenous morphine. Beta endorphin has been best known of the opioid related to the reproductive system, regulating variety of pituitary hormones, including gonadotrophins. Beta endorphin has a role in the regulation of the normal ovarian cycle. So ये जो opioids है उसका directly अनुवासन बस्ती के साथ क्या connection है? स्नेह बस्ती after giving that through rectum, fast absorption reaches in the systemic circulation, GIT and enteric nervous system, which stimulates the endogenous opioids directly. अनुवासन बस्ती देने के बाद में वो opioids को stimulate करता है. उसकी वजह से क्या होता है? Hypothalamus activate होता है, which influence GnRH, FSH और LH को रिलीज करके उसकी मात्रा को कम करता है, उसका जो भी इन्फ्लुएंस करता है और रेगुलेट द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस और रेगुलेट्स द ओवेरियन साइकिल एंड ओव्यूलेशन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. मतलब कि इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाता है, एफएसएच एंड एलएच को कम करता है, ओवरी में से फॉलिकल को रिलीज करता है और विद इन अ वेरी फास्ट सेकंड्स. हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट. उत्तर बस्ती फाइनली क्यों उसका मेन रोल है मैंने पहले बताया, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम. अभी के जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, इफ यू आर गॉन थ्रू देम, majority in the cases there is the low level of AMH, anti-mullerian hormone. In this condition it is also happened. एंड डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम के लिए अलग अलग सैचेट्स देते हैं, जैसे विटामिन डी के सैचेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम. अभी तो ऐसा आया है रिसेंटली कि टेस्टोस्टेरोन का जेल होता है जो डायरेक्टली डॉक्टर लोग गायनेकोलॉजिस्ट अभी रिसेंटली मार्केट में हुआ है और वो टमी के ऊपर अप्लाई करने के लिए बोलते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम. और उसका 2 टाइम्स पर डे ऐसे उसका डोजेज रहता है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ ना जाए. उन लोगों के पास में एंडोमेट्रियम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न में ऐसा कोई जैसे बोलते हैं मैजिक नहीं है, बट वी हैव एंड दैट इज उत्तर बस्ती. उत्तर बस्ती का अलग भी और भी कि मान लो कि इनफर्टिलिटी का केसेस है तो उसके अलग से भी बहुत ज्यादा फायदे है, जैसे कि इन्फेक्शंस को वो क्योर करता है. इंट्रावेजाइनल, ये बात है इंट्रावेजाइनल उत्तर बस्ती, हाँ, नॉट वेजाइनल उत्तर बस्ती. Intravaginal उत्तर बस्ती में also facilitate the absorption of drug as posterior fornix has a very rich blood supply. So जो भी cervical factor होता है उसको भी वो remove कर देता है. Intracervical उत्तर बस्ती which oil based drug helps to remove the cervical stenosis and to restore the function of cervix, which helps to treat dysmenorrhea also. Intracervical उत्तर बस्ती with Bruhan drugs like ghee stimulate the secretion of cervical mucus leading to ascent of sperms in uterine cavity जैसा कि pH फैक्टर बोला जाता है तो उसके लिए भी उत्तर बस्ती फायदेमंद है. इंट्रायूट्राइन उत्तर बस्ती with Greek based Snehan and Bruhan drugs helps in rejuvenation of endometrium, especially where apart from regular ovulation poor endometrium is causing infertility or scanty menstruation. ऐसा नहीं है कि फॉलिकल में से चलो रप्चर होता है, ओवम रप्चर होता है तो भी क्यों नहीं होता है. वी हैव टू सीन ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम इफ वी नोन अबाउट दैट. ओके, जो क्राइटेरिया बोला गया है आईयूआई के लिए कब हम पेशेंट को ले सकते हैं, तो 17/7 7 mm का एंडोमेट्रियल थिकनेस मिनिमम होना चाहिए विथ ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम.
पर्टिकुलर मैं स्लाइड ऐड करना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, बट दिस जो भी प्रोटोकॉल है वो उत्तर बस्ती से आई हैव गेन, कि जो भी मेरे पेशेंट है उसके अंदर उत्तर बस्ती करने के बाद में मेरे को मिला है। अभी मेरे 2 रनिंग पेशेंट है, मैं आपको दिखा रही हूँ उसके केसेस एवरीथिंग, बट वो रिजल्ट दे रहा है और वो भी फैंटास्टिक रिजल्ट वी आर अचीविंग। These are the menorrhage and tubal factor. हाँ, नसिया, hypothalamus and anterior pituitary plays major role in regulation of genital organ hormones. Both have their anatomical position in head. Hypothalamus is also responsible for the vasomotor changes in the body, which is functional area of nausea. Of course, I started my infertility patients with POF first with Takradhara treatment. Why? It is having cooling properties and sees the same effect on the body and mind. It reduces stress, improves mental health, improves skin and hair quality. It is believed to have a balancing effect on the deepest recesses of our brain, stimulating the endocrine system, the pituitary and pineal gland, enhance pleasure neurotransmitters. It is also said to enhance blood circulation also. So finally, in Ayurvedic text, there is no direct reference is available for premature ovarian failure, but Acharya Shushruth has mentioned Sarvanga Dhatu Kshaya Rajonivritti as in concept of Sri Shukra Dhatu, ovarian hormones can be correlated with Antah Shukra. Rajaha Nirman is done by Ras Dhatu and all the Dhatu portion occurs in Uttaro Uttar Kram. As this disease is Vata predominant, which is shown by hot flushes, night sweats, and insomnia, dryness of vagina. So treatment should be planned to alleviate Vata dosha or nourishes Ras Dhatu and also normalize Pitta. Virachan and Basti is proved of its highly beneficial effects. Nashya and Takradhara is also advised to improve psychological changes, hair and skin textures. Panchakarma procedure like Snehan Svedan, Virachan, Niru Basti, Uttar Basti, Nashya, Takradhara, along with oral Ayurvedic medications, is effective and safe treatment modality for the alleviation of symptoms related to premature ovarian conditions in women. See, which I have discussed before. ये मेरा पेशेंट है कैलाश बन करके, वो खुद एलोपैथिक सिस्टर है इधर बड़ौदा में, जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के वार्ड में उसका जॉब था। उसको था टोटली सेकेंडरी एमेनोरिया। वो मेरे पास आई थी प्रीमेच्योर प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर लेके आई थी। तब उसके एफएसएच एंड एलएच थे मोर देन 150, और मॉडर्न में तो साफ मना कर दिया था कि यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज एडप्ट चाइल्ड। वो मेरे पास आई थी, मैंने इधर सब कुछ मेंशन करके रखा है, एवरीथिंग, एलएमपीज वो सब बाद में हुआ। मैंने उसका ट्रीटमेंट प्लान किया, इधर यू कैन सी इन आईपीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया शिरोधारा, उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स करने के बाद में मैं जाती हूँ विरेचन, शरीर शुद्धिकरण। उसके बाद में बस्ती रिपीटेडली 2 months के अपार्ट, लेखन बस्ती आई एम यूजिंग, and after that Uttar Basti, the courses of 3 Uttar Basti, and these are the results. ये पेशेंट 2 साल से मेरे पास आता था। ये you can see here 6th February 2023 her FSH level was 47.80। जब मेरे पास पहले आया था तब वो more than 100 था। इधर मैंने सेकंड रिपोर्ट रखा है, and LH is 12। here you can see ऑन 1 मई, मतलब कि फेब्रुआरी से लेके मई में मैंने दूसरा करवाया, और वो है एफएसएच लेवल 29 विच इज रिड्यूस्ड टू 47 डायरेक्टली, यू कैन सी हियर, एंड एलएचएस इज ऑलमोस्ट 12। her AMH level was also improved, and you can see here in my OPD case paper, that is her LMP is almost regular in every month, almost, you can see here in details in left side I have mentioned. See, this is, I have got the tremendous result of this Kailas Ben, and the another one patient is going under my treatment, and that is Janki Ben Patel. Here,
हर हार्मोनल लेवल यू कैन सी हियर, मेरे पास सब पेशेंट ऐसे ही हार्मोन लेके आते हैं, मोर देन 100 FSH एंड LH वाज 50, और उसका तो आता ही नहीं है, मतलब प्राइमरी एमेनोरिया तो नहीं बोल सकते, बट अभी सेकेंडरी से भी ज्यादा ग्रेड में अभी उसका एमेनोरिया है। उसको भी मैंने सेम प्रोटोकॉल से चालू किया है, तक वो अभी प्रोसेस में है। सो अभी मैंने उसका जो फर्दर है रिजल्ट वो अभी मैंने अटैच नहीं किया है, बट आफ्टर दिस रिपोर्ट्स उसके जो अभी क्या है FSH एंड LH, वो 105 से FSH हुआ है 85 एंड LH हुआ है 50 से लेके 40। इतना इंप्रूवमेंट मेरे को जानकी के केस में भी मिला है। सेम प्रोटोकॉल, विरेचन, शरीर शुद्धिकरण, लेखन बस्ती, डिफरेंट कोर्सेज एंड उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में मैं फलगरीत और शतपुष्पा ऑयल यूज करती हूँ, पर्टिकुलर इन दिस केसेस। सो दिस इज ऑल about this POF and my Ayurvedic conceptual views and my clinical case studies. And this brings end to this presentation. Anyone has any questions, then welcome. And thank you one and all. हेलो मैम। Yes. मैम थोड़ा एक सवाल था कि विरेचन से पित्त का और क्षय हो जाएगा तो रज का क्षय नहीं हो जाता क्या? Pardon me? विरेचन से पित्त का क्षय होता है ना? नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, इट इज गुड। विरेचन से पित्त का क्षय नहीं करना है, हमें बीज को शुद्धिकरण करना है। जैसे काश्यप ने बोला है, विरेचनम तो बीज शुद्धिकरणा नाम, तो वो शरीर शुद्धिकरण के अर्थ में हमको देना है। उसके बाद में जब हम लोग लेखन बस्ती करते हैं तो उसके अंदर पूरे ही उष्ण तीक्ष्ण लेखन द्रव्य यूज करते हैं। सो हम ड्रग चूज करते हैं, जैसे कि विरेचन अलग अलग प्रकार के लिए आपको पता ही होगा कि स्वस्थ के लिए अलग होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि जिसको मेंसेस नहीं आता है उसको हम विरेचन नहीं करवा सकते हैं, बट इट इज फॉर टीनेजर गर्ल की जिसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, जो बिफोर मैरिड है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, उसके अंदर हम ये कंसेप्ट रख के चलते हैं कि चलो भाई उसके अंदर जैसा कि PCOD कंडीशन है, राइट, लाइक ओवेरियन सिस्टिस जो कंडीशंस है, उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली वमन करके बस्ती देते हैं। बट इन दिस कंडीशन, in regards of particular follicle and ovaries, we have to go through either woman, you can also do woman, but मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं ना वो वमन के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, इतना लीन एंड थीन होते हैं और मेंटली एग्जॉस्ट होके आते हैं। सो आई कैन डू वमन, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग विरेचन पर्टिकुलर इन रिगार्ड्स ऑफ दिस फॉलिकल एंड ओवरीज। मैडम, और उत्तर बस्ती को समझो हम 3 साइकिल्स करते तो फर्स्ट साइकिल में हम ये तुरंत फलगुत यूज करेंगे या नहीं? शुरू में कोई तेल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप फलग्रुत यूज करते हो। मैं देखो मैं कैसे करती हूँ, फलग्रुत का डायरेक्टली यूज है AMH के ऊपर, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट फलग्रुत से ही करती हूँ। मेरे उत्तर बस्ती के 2 साइकिल्स जो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में हम लोग देते हैं, उसमें मैं फलग्रुत यूज करती हूँ। उसके बाद में मैं शतपुष्पा ऑयल यूज करती हूँ। शतपुष्पा से मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होता है, HPO एक्सिस जैसे रेगुलर होता है, ओव्यूलेटरी एक्सिस भी रेगुलर होने लगता है, और साथ साथ में AMH का लेवल भी बढ़ता है। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग फलग्रीत, देन आफ्टर आई एम यूजिंग शतपुष्पा तेल। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट यू कैन चूज आइदर नारायण तेल ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन दिस कंडीशन। बट मुझे फैंटास्टिक रिजल्ट मिला है शतपुष्पा ऑयल स्पेशली। लेकिन वो आप बोल रहे हैं कि पहले फलगुत करके फिर बाद में शतपुष्प यूज करेंगे या फिर कैसे? हाँ डिपेंड्स, मतलब जिसका एंडोमेट्रियम जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्डिव नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना वो 4 स्टेप्स, तो उसके लिए फिर मैं AMH को बढ़ाने के लिए पहले फलग्रीत देती हूँ, बाद में शतपुष्पा तेल देती हूँ। जिसमें एंडोमेट्रियम थोड़ा भी रिस्पॉन्सिव है तो उसके अंदर फिर मैं शतपुष्पा से ही डायरेक्टली शुरू करती हूँ। और उत्तर बस्ती का भी ऐसा नहीं है कि 2 ही साइकिल, वो भी मैं 2 मंथ्स के अपार्ट में फिर से लेती हूँ। जैसे बस्ती रिपीटेडली करते हैं ना, वैसे उत्तर बस्ती भी रिपीटेडली करना पड़ता है ऐसे केसेस में। मतलब इट मे टेक 2 years मिनिमम टू गेट अ रिजल्ट। हाँ वही मैडम, मुश्किल रहता है ना कि पेशेंट वेट नहीं करने का है, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है कि नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथ में तो वो होता ही नहीं है, जो उनका जो प्रोटोकॉल रहता है, राइट, जो भी है ओवरऑल है कि जिसकी वजह से FSH LH, तो भी मेरे पेशेंट्स में तो उससे भी नहीं होता है। जो विड्रॉल ब्लीडिंग होना चाहिए वो होता ही नहीं है। और हमने ये
मिल रहा है रिजल्ट, और पेशेंट अभी रिजल्ट मिल रहा है तो पेशेंट भी आते हैं और उनको भी हम काउंसल करके रखते हैं कि आपने इतना इयर्स उसके पीछे दिया है तो हमें भी 1-2 साल दे दो, और मिलता है, पेशेंट आते हैं। शतपुष्प ऑयल मैडम आप खुद प्रिपेयर करके हैं, क्योंकि वो मार्केट में तो ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं मिलता है मार्केट में, शतपुष्पा नहीं, एक्चुअली शतपुष्पाद्य ऑयल। वो मैं एक्चुअली, हमारे कलीग है डॉक्टर सौरभ हुआ करते हैं जो IPGT एंड RA से है, पंचकर्मा से MD है, और जूनागढ़ में उनका बहुत बड़ा फार्मेसी है, तो मैं उन्हीं से मंगवाती हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए इधर बड़ौदा। ओके मैम, आप उनका नंबर शेयर करेंगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। और उसका पूरा उनको आप बोलोगे तो वो अदर भी मेडिसिन बहुत अच्छी बनाते हैं, जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को ये कंडीशंस में देती हूँ आमल की रसायन, तो वो 21 भावना वाली आमल की रसायन प्योर बनाते हैं, उसका रिजल्ट मेरे को मिलता है। ओके मैम, आप चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कर दो तो मैं हाँ, या डेफिनेटली, श्योर। अच्छा रहा सेशन मैम, थैंक यू। या Ma'am, there's a question in the chat box. एक सेकंड। AMH is higher leads to PCOD conditions, and it is due to that delayed cycles and PCOD. And age is generally between 32 to 40 years. Proceed insert. Yes, it's very easy. AMH जब भी high होता है, मतलब कि if it is nearby 4 or 5 or 6, then it clearly represents PCOD. We have to correct only lifestyle and stress. एंड वीराचन एंड बस्ती इज द सेम प्रोटोकॉल। इसमें तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, विद इन 4 months इवन, ऐसे कंडीशंस में। मेन रोल AMH का ही है। हाँ, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि PCOD जो कंडीशंस है वो सेम रहती है, कभी कभी एक ओवरी में वो क्योर नहीं हो पाती है, लेकिन फॉलिकल एक ओवरी में से तो रप्चर होना शुरू हो ही जाता है। बट मैम USG में तो नॉर्मल आता है, सिर्फ AMH का ही वैल्यू हाई जाता है। नहीं वो, हाँ तो भी मिलता है ना रिजल्ट। AMH इज हाई, ऐसा नहीं है कि PC, बट ज्यादातर केसेस में PCOD होता है ऑन द सेकंड डे जब हम कराते हैं, तो नहीं होता है तो भी वी शुड स्टार्ट दिस विरेचन एंड लेखन बस्ती लेवल। AMH को रिड्यूस करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, AMH को बढ़ाना इज डिफिकल्ट थिंग, बट उसमें उत्तर बस्ती वो सब नहीं देना है। यू कैन गिव लेखन बस्ती रिपीटेडली अकॉर्डिंग टू माइंड। मैम आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे कि आप कौन से लेखन बस्ती इसमें यूज करते हैं, कौन से द्रव्य के? या श्योर श्योर। जब हम लोग पढ़ते थे IPGT एंड RA में, तब हमारे मैडम थे, उन लोगों ने एक बीज धारा का योग पढ़ाया था हमने। आई एम यूजिंग एंड अदर माय कलीग्स आर आल्सो यूजिंग शतपुष्पा, शतावरी, अष्टमधु, वरियाली और सूंठी, और मिश्रेया एंड सूंठी, ये 5 का कॉम्बिनेशन विच आई एम यूजिंग इन कल्क in Basti. Shatapushpa, Shatavari, Yashtimadu, Mishreya and Sunthi. You can also replace Sunthi with 3 kadu. And मैं उसमें डालती हूँ त्रिफलाकवात and गौमूत्र 50 ml in each Basti. मैम both means each is 50 ml, 50 ml त्रिफलाकवात and 50 ml गोमूत्र? नहीं, गौमूत्र अर्क जो हम बाद में त्रिफलाकवात क्वांटिटी शुड बी देयर 350 ml to 300 ml like other Bastis, right? It is कषाय, या एंड बाद में सबके लास्ट में मैं ऐड करती हूँ गौमूत्र अर्क एंड दैट इज 50 ml. ओके मैम। यस। तो मैम इसमें से विरेचन फॉलोड बाय लेखन बस्ती, तो Yes, टुवर्ड लोअर साइड। definitely you can try and let me know within 6 months you can get, of course. AMH को कम करना it's easy than उसको बढ़ाना। सिर्फ उत्तर बस्ती नहीं करना है, जैसे हम फाइब्रोइड के पेशेंट में करते हैं ना वैसे करना है। फाइब्रोइड के पेशेंट में हम करते हैं ना, हम शुद्धिकरण करके, जैसे विरेचन इज द मेन राइट इन फाइब्रोइड्स एंड ऑफ कोर्स लेखन बस्ती, बट वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस उत्तर बस्ती लाइक दैट। जिसमें भी AMH हमें बढ़ा हुआ मिलता है उसमें उत्तर बस्ती को वॉमिट कर देना है हमें, और मिलता है। ऑफ कोर्स आप वमन भी करवा सकते हो, वमन विरेचन करके लेखन बस्ती करवाओ तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, यस। Any more questions? Yes, ma'am.
Ma'am, I have a case of 35-year-old primary infertility. Since 2 years, she was not menstruating. She was on those herself. She was taking those registron pills and menstruating. And late marriage. She's 35 years, married at the age of 33 years. 2 years of married life. Before marriage itself, she was taking those registron pills for twice or thrice a year in a year for menstruation. Now, when she came to me, her FSH was 110. Oh, yes. Her FSH was 110. I gave her woman also with some treatment, and after 3 months, when I saw there was not much improvement, it just came down to 106. I gave her woman, but I had not given her basti. And apart from that, she also has intramural fibroids. Yes. And her AMH is also very low. How do I go with this case, ma'am? You have been through Virachan after woman? No, I gave her woman. Now it's almost 3 months after I gave her woman. Then start Virachan. I gave her internal medicines for working on the endometrium. First, I gave her some medicines for decreasing the fibroid. Then, and even her prolactin levels are high, ma'am. They are up to 30 or something. This is the case of but nothing fibroid. is effective. Yes. वमन तो आपने किया, बहुत बढ़िया किया, but start with Virachan. Okay, I can give her another Virachan. Yes, शास्त्रोक्त Virachan, not सदियो Virachan. Okay. Yes. Okay. और विरेचन करने के बाद में आप बस्ती दो, उसका फास्ट वो कम होगा, प्रोलैक्टिन भी कम होगा और ये भी कम होगा, FSH and LH. लेकन बस्ती देना. हाँ, वही स्ट्रॉन्गी हम देते हैं. ओके. ओके मैम. उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है? Endometrial thickness is good, ma'am. It is like 7-8 mm, I think. Then you can give na lekhan basti आराम से. Okay. And Uttar Basti can I give, ma'am? No. Because in one ultrasound they are telling there are also intrauterine fibroid along with intramural. In one ultrasound it is showing only intramural fibroid. So I'm not sure of it. उत्तर बस्ती का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर, यदि आप लेखन बस्ती और विरेचन के ऊपर फोकस करोगे तो, अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा, उत्तर बस्ती इज रेकमेंडेड ओनली द एंडोमेट्रियम थिकनेस भी गुड है. हाँ, यस, एग्जैक्टली. अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है देन यू शुड गिव उत्तर बस्ती. यस, एग्जैक्टली. इवन इन केसेस ऑफ PCOS, मैम. ऑफ कोर्स. ओके. Okay, ma'am. And if one more case, she looks like PUF. Now she's not yet investigated, yet to be investigated properly. Her FSH and AMH is not being done, but she has polyp, ma'am, in this one. Just recent, 2 months back when she did it, there was, but she's not having any symptoms as such. Secondary infertility. She's also 35 years. Yes. And her AMH was less 2 years back. Recent one she's yet to do, and FSH also she has yet to do. But with endometrium polyp, now how do I go with this case, ma'am? She's also having like 2-3 months में एक cycle आता है. हाँ, वही मैंने अभी ऐसे ही सेम केस को हाँ मिलता है. एंडोमेट्रियल पे पॉलिप है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, सेम प्रोटोकॉल, विरेचन एंड बस्ती सेम, और वो होता है क्योर. यस, डेफिनेटली. हमें उसका थिकनेस ही कम करना है. पॉलिप है या हाइपरप्लेशिया है, डेफिनेटली इट विल वर्क. और मैंने किया है, आई हैव डन वर्क इन एंडोमेट्रियल पॉलिप. उसको प्रेगनेंसी भी रहा, डिलीवरी भी हुआ और बच्चा भी. अभी रिसेंटली आप लोग हो या नहीं पता नहीं, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें मैं पोस्ट भी करते रहती हूँ. उसको तो सिर्फ मेरे को ग्रुप. हाँ, श्योर, डेफिनेटली. ग्रुप इफ इट इज इन दिस, हाँ मुझे ऐड कर दो तो आई डेफिनेटली. मेरे तो रहते पोस्टिंग पूरा, मैं डिटेल के साथ में पोस्ट करती हूँ. आपका कोई ग्रुप है तो आप प्लीज मुझे ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज
मेरे जो भी है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इसी चैट बॉक्स में मैम या पर्सनल नंबर है? Could you please share? Yeah, why not? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। This is my number and मैम WhatsApp number. इसमें okay ma'am, okay ma'am, in this endometrial polyp case we should give Virachan, Lekan Basti, and what are the internal medications ma'am? इंटरनल मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जैसे कि आपने बताया कि 2 to 3 months एमेनोरिया रहता है, राइट? तो वी कैन स्टार्ट and दशमूलक endometrial वात thickness अनुलोमन। ज्यादा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो रहेगा ना, पोलिप है उसमें तो ज्यादा ही रहेगा, अराउंड 10 और 12। तो उसको रिड्यूस करने के लिए Okay. वीरेचन और बस्ती, और उसके बाद में Okay. सिम्टम्स जैसे कि रज प्रवर्तनी बटी, इंडक्शन ऑफ मेंसिस लाइक दशमूल, और परगेटिव देना है डेली बेसिस पे। मैं सीवाक्षर देती हूँ इफ इट इज रिलेटेड विथ फाइब्रोर और पॉलिप। काचनर गुगलू विल वर्क देयर, लाइक दैट। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे हाइपरप्लेशिया कंडीशंस और पॉलिप कंडीशंस और जैसे सीस्ट है, फाइब्रोइड्स है, वैसे सब कंडीशंस में मेरे को हम लोग पहले यूज करते थे गोक्षुर गूगल, फिर यूज करते हैं काचनार गूगल, अभी हम यूज करते हैं पंचतिक्त घृत गुगलू। इसका फैंटास्टिक रिजल्ट Okay. मिलता है, पंचतिक्त घृत गुगलू। और Okay, ma'am. घी यदि आप देना चाहते हो तो पंचगव्य घृत, वो आपको पता ही होगा कि इसका रोल है। Okay, and there will be complete cessation of the polyp, ma'am. हाँ डेफिनेटली, प्रेगनेंसी में अफेक्ट ही नहीं करेगा। ये तो मैं जो मेरे मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। यदि मैंने इफ आई हैव नॉट बीन एनी एक्सपीरियंस देन आई विल डेफिनेटली क्लियरली टेल यू कि आई हैव नो आइडिया। You can go. No, ma'am. In other cases of polyps, like those who Yeah. not infertility cases, in normal polyp cases, हाँ if हाँ, we want to give, then also the same thing to be followed. yes 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 yes, And जो भी the इन्फ्लामेटरी patient कंडीशंस without है, सीस्ट surgery, है। हाँ हाँ, बिना कोई सर्जरी की पूरी पॉलिप सही हो जाएगा। यस डेफिनेटली हुआ है। Yes, ma'am. या Okay. सिवाय Okay. नेबोथियन फॉलिकल्स, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, जैसे अग्निकर्मा है या अदर थेरापीज, राइट? No, ma'am. If there are Nabatean follicles, it will not affect the pregnancy, no, ma'am. हाँ हाँ, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना नहीं प्रेगनेंसी नहीं के लिए? नहीं, कुछ नहीं होता हाँ. है। मैडम Okay. एंडोमेट्रियल And थिकनेस what is का the अगर quantity of Satapushpa Taila and Falagrata, ma'am, in for Uttar Basti? 5 ml. Intrauterine capacity is only 2 ml, but we have to give 5 ml in syringe. Ma'am, can we use the IUI cannula in OPD and give, ma'am? हाँ, हम लोग वही यूज Uttar करते हैं। Basti? Yeah, is it Infant feeding tube, compulsory actually that it you is have to do best. it in OT only? Yeah, infant IUI feeding tube is cannula, best. हाँ, also it is good. infant feeding. Yeah. We can give in OPD level also, no, ma'am? Oh, ओपीडी में प्रॉपर प्रिकॉशन और okay, ma'am. स्टरिलाइजेशन और ऑटोक्लेव के साथ हो तो, अदरवाइज फिर इस पे Okay. इन्फेक्शंस लगने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर उसको वो होता है एब्डोमिनल पेन, अदर नोशिया एंड फीवर, लाइक दैट। समटाइम्स वॉमिटिंग्स भी होता है इफ प्रॉपर स्टरिलाइजेशन नॉट देयर। Okay. Okay, ma'am. Ma'am, if you are giving Lekan Basti, along with that we can give Uttar Basti also. Like morning, if you are giving Lekan Basti, then afternoon time we can. No, that Only should be after entirely completion of different. Lakan Basti, there is the plan for Uttar Basti, one by one. Okay. And Uttar Basti same, starting from the 10th day, ovulation time only. Yes, yes. Alternate days. हाँ, लेकिन इसमें तो क्या रहता है, ये सब पेशेंट होते हैं ना, वो टोटली एमेनोरिया के होते हैं, तो इसमें मैं कोई टाइम बाई नहीं देखती हूँ। उसको जैसे कंप्लीशन हाँ, होता right. है, यस, उसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन वी हैव टू डायलेट पूरा वो जो सर्वाइकल ओस होता है उसको ओपन करना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत ही फर्म रहता है उन लोगों का, मेंस्ट्रुएट भी नहीं कर पाते।
तो उसको डायलेटर से पूरा जेंटली हम लोग वो ऑब्स्ट्रक्शन को वो उसको ओपन करते हैं, बाद में हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं. Ma'am, even IUI cannula also doesn't enter inside. It is that hard. No, you can use na. IUI is much better than infant feeding tube, of course. इसमें ब्लॉक No, होने के even if चांसेस you're नहीं रहते. using IUI, you need to dilate it. If you're using IUI also, you need to dilate it. या हाँ, डायलेट करना पड़ता है ऐसे कंडीशंस में. जो भी सेकेंडरी एमेनोरिया के पेशेंट होते हैं ना, उसमें वो ओस तो बंद ही रहता है ऑलमोस्ट. इट इज पेनफुल ऑल्सो. Okay, matlab you cannot do it in OPD level then. No, it is better than if it is possible in OT or another procedure room, or you can also do at your Shalya department or Shalya OT table. Okay, क्योंकि dilatation में पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना उनको. होगा ये ऐसे पेशेंट्स में होता है. मेरे को छर्दी रिपु भी देना पड़ता है, शंखवटी भी देना पड़ता है पेशेंट को, और चंद्रप्रभा वटी भी देना पड़ता है कई बार आफ्टर उत्तर बस्ती. कौन सी मैम? शंखवटी, चंद्रप्रभावटी और छर्दी रिपुवटी. छर्दी. ओके, हाँ. छर्दी रिपु या कपूर काचली. ओके मैम. Yeah. Okay, ma'am. Ma'am, one more patient, her HSG was, they were not able to do it because of that stenos, this one, os. So for such patients, can we keep intravaginal pichu, and will it have any effect? हाँ, definitely. जिसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस है उसमें हम वैसे ही करेंगे. योनि प्रक्षालन, योनि पीछू, योनि पूरण. Okay, ma'am. And for how many, matlab throughout the month she can do it other than periods ka time pe? हाँ, yes. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. It was a nice lecture, ma'am. Yes, thank you. मैम से पूछने का था कि अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस कम है तो फिर उसमें लेखन बस्ती लाइक इट इज नॉट देयर ना, वी कांट डू इट ना, लाइक उसको से और ये होगा ना कि करना है. नहीं करना ही है ना हमें. हाँ, मतलब देखो, वैसे बहुत कम केसेस मिलते हैं जिसमें लेखन बस्ती तो क्या है कि वो इसका डायरेक्टली यूट्रस के ऊपर रोल नहीं है, उसको डायरेक्टली जो उत्तर बस्ती है उसका एंडोमेट्रियम के ऊपर रोल है. तो लेखन बस्ती आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कम लेखन भी दे सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लेखन ही देता है. गौमूत्र नहीं डालोगे आप, त्रिफला डालोगे तो भी लेखन हो जाएगा वो. So depends on condition, you can choose drugs and उसको दूर करना है, इसलिए इसी yes, exactly. Yes, thank you. Yes. Hope there are no more questions. Thank you, ma'am, for this wonderful session. By this, we are concluding today's session. Hope you all had a great session today. Once again, thank you so much, ma'am, for this informative and enlightening session. Thank you all the participants for attending today's session. Please stay connected with us in all our social media for upcoming events. Thank you all the participants. Thank you, ma'am. Good night. Thank you. Okay, thank you.